किसी को भी नहीं पहचान सका। सबकी लाशों की दुर्दशा बहुत ही बुरी थी, भयानक थी, भयंकर थी। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज 7 है। 70 से ऊपर फाइटर्स, बॉम्बर्स, गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स और एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस ट्रिपल भी है। मतलब इसीलिए पाकिस्तान हमें छोटी-छोटी लड़ाइयों में बिजी रख रहा है ताकि So Jesus had spoken 7 statements after he was crucified. ये बस की बात नहीं है। संसार में बहुत महान ज्ञानी, योगी जन, साधु, संत, महात्मा सब बैठे हैं, वे क्यों नहीं कर सकते हैं? Into exoneration. Exoneration means when Jesus was asked that how many times should we forgive each other? 7 times, 7 connection, 7 times. So आगे जो हुआ वो बहुत ही भयानक था, और जो बातें मेरी भगवान के साथ हुई, द फेस ग्लोड लाइक गॉड। वो की सारी कायनात, ईश्वर के द्वारा बनाया गया सारा क्रिएशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम टू एन एंड। In how much time? In Christianity, lot of information is there about the number 7, and not only in Christianity, in Hinduism also. Hinduism में भी नंबर 7 की बहुत बहुत महत्ता। श्री कृष्ण tells आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। nothing whatsoever higher than all this is something rest upon है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, जिस भी नाम से आप उन्हें संबोधित करते हैं, है तो वो एक, नाम अनेक। लेकिन इतना जान लीजिए, आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो आपका भगवान, वो आपका गॉड, वो हम सब से बहुत नाराज है, बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि इस संसार के अंत का समय उन्हें समय से पहले होता हुआ दिख रहा है, और समय से पहले ये संसार, ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। कैसे और क्यों, और ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे जानने के लिए और इसे समझने के लिए इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। एक एक शब्द पर, एक एक वाणी पर अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूँ वो सत्यवाणी है, और सत्य के सिवा और कुछ नहीं। और इसमें मेरा या किसी का भी कोई आशय नहीं है, केवल एक एक्सपेक्टेशन है कि इस इतने सुंदर प्रभु के द्वारा बनाए हुए संसार को हम यूं ही उजड़ने न दें। इसे किस तरह रोक सके, ये हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। तो आप सुनिए और ध्यानपूर्वक सुनिए कि मैंने क्या देखा और क्या हुआ। 6 जनवरी 2024, जो कि संडे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 7वां दिन है हफ्ते का, जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी में 7th डे इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग डे ऑफ गॉड। दैट मीन्स आफ्टर 6 days ऑफ वर्क, 6 days ऑफ गिविंग his time to the creation, God rests on the 7th day. 7th day is also supposed to be the fulfillment day, the day of completeness. But what happened on 6th of January 2024, the 7th day Sunday? What did I see? You need to really understand. क्या देखा, कैसे देखा, और कैसे प्रभु से, ईश्वर से क्या क्या बातें हुई, उसे सुनने के लिए ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा। उस समय, जिस समय आप अपना पूर्ण समय इसे सुनने में दे सकते हैं, और उस समय जिस समय आप इसे सुनकर अपने जीवन में ऐसा बदलाव ला सके
ताकि ये संसार समय से पहले नष्ट होने से बच सके। तो ध्यान से सुनिए, 6 जनवरी 2024 रविवार का दिन, सुबह का समय रहा होगा, करीब 5 से 7 या 8 बजे के बीच का। उस समय जिस समय मैं सो रहा था, अब सोने के समय तो हमारा जो थॉट्स है, हमारी जो माइंड की थॉट्स है, हमारी आत्मा है, वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती है, दूसरी दुनियाओं में जा सकती है। तो मैंने ये देखा कि मैं एक बिल्डिंग के 5वें माले पर, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द 5th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, the gallery of the building. And when I was standing on the 5th floor of the gallery of the building, as if it was like I was going to get down, जैसे मैं नीचे उतरने वाला हूँ, और मैं गैलरी पे जैसे ही पहुँचता हूँ और पहुँचकर खड़ा होकर नीचे रास्ते पर देख रहा होता हूँ, तो मुझे दूर से मेरी बाईं ओर, ध्यान दीजिएगा, my left hand side, towards my left, I saw a very cart, a wooden cart coming in from a longer distance. एकदम पुराने गांव के समय की जैसी बैलगाड़ी होती है, ऐसी बैलगाड़ी टाइप गाड़ी को आते हुए मैंने मेरी बाईं ओर से रास्ते पर से देखा आते हुए। मैं 5वें माले पर खड़ा था, लेकिन उस गाड़ी को कोई बैल या कोई गाय नहीं खींच रही थी। उस बैल को खींच रहा था एक इंसान। दूर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैं देख रहा था उतने में ही मेरे राइट साइड में, टू माई राइट, ऑन माई राइट कम्स अ लिटिल गर्ल एजेड 8 to 10 year old। 8 से 10 साल की बच्ची मेरे राइट साइड में आती है और आकर तुरंत मेरा हाथ ग्रैब कर लेती है। शी हेल्ड्स माई हैंड विथ फोर्स एंड शी टेल्स मी, प्लीज डोंट लीव मी। I was stunned with her these words. How and why will I hold her hand and why will I leave her? I mean, I didn't knew who that girl was. वो लड़की कौन थी, छोटी बच्ची कहाँ से आई थी, नहीं जानता था, लेकिन उसके चेहरे का डर देखकर मुझे ये समझ में आया कि वो भयभीत हो रही है किसी बात से, और उसने मुझसे कहा कि मुझे छोड़ना मत। तो मैंने भी उसका हाथ जोर से पकड़ा और मैंने कहा, नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ, मैं नीचे ही जा रहा हूँ, तुम्हें भी अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ देता हूँ, कम along with me. And we both walked down. As we walked down and reached on the ground floor, by that time that cart had come quite closer and there was lot of nuisance. इतनी आवाज़ें, अचानक से environment का सारा पॉजिटिविटी जो था वो चला गया, हो हल्ला होने लग गया, बहुत ज़ोर शोर से चीख पुकार की आवाज़ आने लग गई। हम भाग भाग कर सड़क पर गए और वो काट हमारे एकदम नज़दीक आ गया, तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई उस काट को देखकर, क्योंकि वो काट, वो जो बुलक काट यानी बैलगाड़ी जो थी, वो कोई बैल नहीं खींच रहा था, उसे खींचने वाला एक इंसान था। धोती और ऊपर जैसे बनियान पहने होते हैं, एकदम टॉन क्लोथ्स पहने हुए, पूरे मिट्टी में और खून में सने हुए कपड़े थे, ऐसा पहना वो इंसान था। और उसका जो बुलक कार्ट था, मतलब उसका जो बैलगाड़ी का जो पीछे का हिस्सा होता है पहियों के साथ वाला, वो बैलगाड़ी का हिस्सा भी पूरी तरह से खून में सना हुआ था। मैं देखकर चौंक गया और जैसे ही मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा तो उस कार्ट में देयर वॉज अ डेड बॉडी completely filled in blood in that bullock cart, completely filled in blood। एक लाश उस बुलक कार्ट में थी, खून में सनी हुई, ऊपर से चादर ढका हुआ था, वो चादर भी फटा पुराना जैसा था, और वो आदमी जो उसे खींच कर लेके आ रहा था बड़ी मुश्किल से, वो भी बहुत सिसक सिसक कर रो रहा था। ये देखकर जो मेरे साथ में लड़की थी वो बहुत भयभीत हो गई और भयभीत होकर मेरे पीछे की तरफ हुई, तो मैंने भी उसे कहा तुम मेरे पीछे रहो। फिर वो कही और उसने फिर से कहा मुझसे कि विल यू लीव मी? आई सेड नो, डोंट वरी, आई विल नॉट लीव यू, आई विल लीव यू ऑन अ सिक्योर्ड प्लेस, एट अ सेफर प्लेस वेयर यू विल स्टे हैप्पी। बाय दैट टाइम देखता हूँ तो क्या उस एक कार्ट के पीछे, दैट मीन्स बिहाइंड दैट वन कार्ट विच वॉज पुल्ड by a weary and distressed soul, a human being carrying a dead body, one by one from behind him came in 6 more carts in the same condition, worst ever condition that I have ever seen in my life, and each carrying a dead body filled with blood. The cart's tires and the cart also had blood
everywhere, smeared upon everywhere. And seeing this, all the people around were shocked. I was shocked and surprised that what on earth has gone wrong. Why these 7 men pulling 7 carts having 7 dead bodies arrived over there. The first cart holder, the very distressed soul human being, came close to me and then asked me that, "Sir, could you please do something of it? Could you please do something about it?" I was shocked and stunned at his statement. I said, "What can I do? I'm just a normal human being like you are, and I have no connection to these dead bodies or this cart or your condition. I would better suggest you go to a nearby police station." तो मैंने उस कार्ट वाले से कहा कि देखो, मैं तो इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, मेरा कोई कनेक्शन भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ, तुम इस कार्ट को और इस डेड बॉडी को ले जाओ नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर। उसने फिर दोबारा मुझसे कहा कि सर प्लीज़ आप ही कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा भाई ये पुलिस का काम है, पुलिस ही कर सकती है, आप पुलिस स्टेशन लेकर जाइए। और वो उतने में वहाँ से घूमने लगा। उतने में ही देखता हूँ तो एक और आदमी पुलिस की वेश में ही मेरे पास आते हैं। इनको देखकर मुझे स्वप्न में लगा कि इन्हें तो मैं जानता हूँ, मेरे अंकल हैं और ये मेरी हमेशा हर समय बहुत भरसक मदद करते रहते हैं। ये वो हैं जो मुझे सही राह दिखाते हैं, किस राह पर चलना है, कब क्या करना है, समय का परिवर्तन कैसा भी हो, अच्छा बुरा, किस समय को किस तरह से हैंडल करना है, ये मेरा हमेशा साथ देते हैं। ऐसा मुझे स्वप्न में देखते समय, उन्हें देखते समय लगा कि मैं इन्हें जानता हूँ। तो वो मेरे पास में आए, पुलिस की वेशभूषा में थे और कार में आए थे और वो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम मेरे साथ चलो, मैं भी पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ, थोड़ा सा अपना काम निपटा लूँ और काम निपटा के फिर हम अपने वापस घर आ जाएंगे। आज थोड़ा छुट्टी लेने का मन है, लेकिन तब तक के लिए पुलिस स्टेशन जाकर आ जाते हैं, तो तुम भी मेरे साथ चल पड़ो, वहीं से हम थोड़ी दूर घूम फिर लेंगे अगर चलना है तो मैं भी उनके इस स्टेटमेंट को देखकर बहुत दंग रह गया कि एक तो ऐसी अवस्था, ऐसी हाल, और ये मुझसे कह रहे कि मैं पुलिस स्टेशन चलूँ। बट बच्ची भी थी साथ में, उसे भी उसके स्थान पर पहुँचाना था, सही स्थान पर। तो मैंने भी सोचा कि पुलिस स्टेशन जाना सही होगा, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो वहाँ पता लगा सकते हैं कि वही बच्ची का भी घर कहाँ है, कैसा है। तो ये सोचकर मैं उनके साथ में, मेरे अंकल के साथ में गाड़ी में बैठ गया। बच्ची भी मेरे साथ में थी, छोटी नन्ही बच्ची, द चाइल्ड वॉज ऑल्सो विद मी। सो आई अलॉन्ग विथ that little girl sat in my uncle's car, who was in the policeman uniform, and we reached police station. But by the time we reached police station, what went wrong? Because the time when I was climbing down the stairs right from 5th floor to ground floor level, it was daytime, bright daylight, around 11 o'clock or 12 o'clock in the afternoon, in the morning. And by the time I got down, the day turned to afternoon, with a lot of dust flying all around when the carts came in. And by the time I reached police station, this entire day turned into night. I couldn't call it as a full night, but just a night before the night, having lot of dust in the environment, lot of negative energies, wolf howling around and lot of noises coming around over there when we reached at the police station. बहुत ही भयानक वातावरण हो गया था जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। इतना अंधकार, इतने उल्लुओं की भी आवाज़ आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा वातावरण हो गया था, मैं तो समझ गया था कि इतनी सारी डेड बॉडीज आई हैं, इतने 7 आदमी 7 कार्ट को खींचकर 7 डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं पुलिस स्टेशन, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अनहोनी होनी है। तो वहाँ पुलिस स्टेशन पे पहुँचने के बाद में आई अलॉन्ग विद दैट गर्ल सैट ऑन अ बेंच on the ground floor, and my uncle said that I'll just be back in 5 minutes after finishing off his work. Further, what happened, each one of us have to listen very carefully with utmost attention, क्योंकि आगे जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। और जो बातें मेरी भगवान के साथ हुई, what I spoke and communicated, this was really horrible. I would say that you need to really pay attention if you love this world, if you love yourself, if you love God. ईश्वर से प्रेम है, अपने आप से प्रेम है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो खैर मेरे अंकल मुझे और उस लड़की को वहाँ पर बैठाकर अंदर पुलिस स्टेशन में चले गए। 5 मिनट का 10 मिनट हो गया,
उतने में ही देखते हैं तो वो 7 कार्ट, दो 7 कार्ट्स पुल्ड बाय दो 7 men, दे वर पुलिंग इट विद ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी। मतलब उनसे खींची भी नहीं जा रही थी कार्ट, जबकि उसमें एक ही डेड बॉडी थी, लेकिन टायर थे पीछे जो लकड़े के होते हैं, और आगे वो अपने हाथों से खींच खींच कर उस कार्ट को लेकर आ रहे थे। एक एक करके 7 कार्ट वहां पर आए। पुलिस स्टेशन में खूब हल्ला होने लग गया, अफरा तफरी मच गई। द एंटायर पुलिस स्टेशन वॉज डिस्टर्ब्ड and people started running here and there, and they somehow took all those carts. The bodies were picked up from the carts, they were taken in. I was sitting along with that girl on that bench, seeing all those bodies being carried inside. The girl got too much afraid, but she wasn't afraid of seeing the bodies. उन बॉडीज को देखकर वो अफ्रेड नहीं थी, उसके अंतर मन में डर तो किसी और ही चीज का चल रहा था। वो डर किस बात का था ये मुझे बाद में समझ में आया, आपको भी समझ में आएगा। आप भी ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे, सुनेंगे कि क्या देखा, तब आप बता पाएंगे कि इसका सही अर्थ क्या है। खैर, मैंने उस बच्ची को अपने पास बिठाया और मैंने कहा, बेटा डरो मत। तो बच्ची ने कहा, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे। अगेन शी सेड, you will not leave me, right? I said, no, I will not leave you. She said, I need you. I said, yes, I am there with you and I'll help you with whatever best way I can. Saying this, we waited over there for another 15-20 minutes, but my uncle did not return. By the time I was waiting, 45 minutes passed on, but uncle did not return. So I got worried a little that where has he exactly got stuck up. So मैंने बच्ची को कहा, तुम थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार करो, I will just go and look up to uncle, where is he? So बच्ची ने कहा, ठीक है, जल्दी आइएगा। मैंने कहा, हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे अंकल को देखता हूँ कहाँ है, ढूंढ कर फिर तुरंत आ रहा हूँ। And I walked from there. I searched every nook and corner of the police station. I took the lift also in my dream. I went on first floor, second floor. I couldn't see my uncle. Then I came back to ground floor. And on ground floor, when I was checking each and every room, when I was moving around, I came across one room. What was there inside that room and what communication happened in that room. उधर उस कमरे में क्या था और उस कमरे में क्या क्या बातें हुई, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर हम हमारे संसार से प्रेम करते हैं तो हमें ध्यान से सुनना है और आगे ऐसे चेंजेस लाने हैं जो हमें संसार को बचा सके और इसे खत्म होने से रोक सके। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 1:45 बज रहे हैं। यकीन नहीं आता? देखिए आप, क्योंकि मैं चिंतित हूँ, मेरी आंखों की नींद जा चुकी है, मेरे प्रभु नहीं सो रहे हैं। माई गॉड इज नॉट स्लीपिंग एंड ही इज वरीड, हाउ कैन आई हैव sleep in my eyes? So I had to come down today to record this vision and post it to the entire world. If you don't believe, look at my watch. What's the time? It's 1:45 a.m. of 11th of January. 5 days since the vision, I was pondering upon what is this vision about? Why did I see this? And then I remembered seeing and communicating with God just before COVID pandemic had hit this entire world. You won't believe what was the communication that God did with me that time. When in brief, I'm going to just tell you that when my first interaction happened pre-COVID session with God, He destroyed me completely. He hit me from every nook and corner. My business was completely into loss. My shops and everything got flooded, got completely shut down. And then he told me, stop doing all these things and focus on what I have asked you to do. Focus on for what I have sent you on this earth. But I told God, I am a normal human being. I am no saint. I am no one. How can you expect me to do all these things? काफ़ी सारी बातें हुई। मैंने उनसे पूछा कोविड से पहले, मैं नहीं कर सकता हूँ ये सब, ये मेरे बस की बात नहीं है। संसार में बहुत महान ज्ञानी, योगी, जन, साधु, संत, महात्मा सब बैठे हैं, वे क्यों नहीं कर सकते हैं? उन्होंने कहा, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं,
तुम्हें अपना कार्य करना है। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा प्रभु, ये मेरे बस का नहीं है। मैं साधारण सा व्यक्ति, अपने परिवार में बहुत खुश हूँ और परिवार के साथ ही अपना जीवन जी रहा हूँ, मुझे उसी में रहने दीजिए। तो प्रभु ने थोड़ा सा क्रोधित होते हुए कहा, ठीक है, देन यू वेट एंड वॉच। मैं उस समय नहीं समझ पाया, लेकिन उनका वेट एंड वॉच गॉट कन्वर्टेड in the next 6 months time period to such a huge pandemic that so many people got killed during that time. This vision again coming down to me, I said, I'm not going to stop. I'm going to put it in front of the world. Let the world take the call. Let all the human souls on this world take a call. What needs to be done to correct what is going wrong. So what happened? I was standing right in front of that room in that police station. The little girl, I had dropped her on the bench outside. I was looking out for my uncle and I entered that room. As I entered that room, so right in front of my eyes were kept those 7 corpses. सातों लाशें मेरे सामने एक एक जैसे स्ट्रेचर होती हैं उनके ऊपर रखी हुई थी, कपड़ा से मुंह ढका हुआ था। और मेरे राइट साइड में पुलिस स्टेशन का मेन इंचार्ज, द मेन इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन was standing to my right. I looked at that incharge and then I looked at those bodies filled in blood. Then I looked at the lady constable who was standing besides those body. And I was surprised. Generally near the corpses, lady constables are never there. But that lady was standing over there. And I looked at the police in charge. He questioned me. The very first question coming from him was that, do you know these people? I asked him, whom? He said, these who are lying there. So I said, how can I know them? I don't know them. I have no connection to this. I've just come down with my uncle over here and I'll be moving out soon. He looked at me smilingly, and smilingly then he said, you haven't even seen these bodies. How can you be so sure that you don't know them? And I was stunned. It was like an acquisition coming on me. So I couldn't utter a word that moment. And that moment, the police in charge, he just told the lady constable, lift up the cloth from the bodies, let him see, let him identify. Probably he may remember someone from them or all of them. So she lifted up the cloth from the first body. As the cloth was lifted up from the body, I was horrified seeing the body because it was completely in a mess. The face couldn't be recognized so well. It was, I can't say, I mean, probably when in war situations, you know, a bomb blast takes place or the bullets pass through your face, that or the face gets burnt or something like that. It was that very. So I could see the face somewhat, but then still I said that I cannot recognize him and I don't know him. The police in charge told the constable, lift up the second cloth from the dead body. The second cloth was lifted up. I couldn't recognize them. And how do I recognize? Because I didn't knew who are they. I had no connections to all this. One by one, from first to sixth body, she kept on lifting the cloth and showing me the bodies. Believe me, I saw in each of these bodies, some being burnt very badly, some being hit with bullets all over, some being like blasted in some air blast or some bomb blast. Every kind of pathetic destruction that might have taken, something bad might have happened with those 6 souls who were lying there. I felt too much pain. But then I was working on the acquisition being put up by that inspector in charge, and I told him that I don't know any one of them. So he said, okay, you don't know any one of them, and these 6 souls you have never met, right? I said, yes, I feel pity about them. They are in such a very conditions. I mean, the people who brought them, they were also distressed. I don't know what has gone wrong on earth, but I don't know them. And then that
police inspector in charge told the lady constable, lift up the 7th body cloth. क्या हुआ? एक पहली लाश से लेकर छठी लाश तक मैं किसी को पहचान न सका, किसी को भी नहीं पहचान सका. सबकी लाशों की दुर्दशा बहुत ही बुरी थी, भयानक थी, भयंकर थी. तो जब 7वीं लाश को कपड़ा उठाने के लिए कहा, तब क्या हुआ? 7वीं लाश से जैसे ही कपड़ा उठा, उठते ही मैंने देखा तो वहां पर लेटा हुआ था एक 5 फुट का होगा इंसान, मेरे ही हेल्थ की बॉडी का इंसान, लेकिन the color tone of the body was black, right? There laid the body of a 5 feet man wearing white shirt, black trouser, shirt was filled in blood. He had a thick golden chain, kind of, the rope kind of chain, design chain in his neck, gold chain, a mustache on his face, and he was lying there looking at his face. I yelled, "Oh my God, Mister, how come you are here?" Now, due to privacy, I cannot say the name of the person whom I saw, but then I recognized that 7th dead body. Whose is it and who that person was? And I was shocked to see that person over here. I looked at the police inspector in charge. I said, how come he is here? What went wrong? You definitely know everything. तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? बताओ मुझे कि क्या हुआ इसके साथ. The inspector looked at me and then said, all those alcoholics, all those smokers, all those people who are gambling, who do womanizing, who do all sorts of wrong things on this earth, their condition is going to be exactly like him. How he is lying there, one day they will also end up their life like that. I looked at him and I said, but he is not that kind of person, because I know him since over 6 to 7 years now. I know that he drinks, and he drinks a lot. I have been trying to explain to him that stop drinking, focus on your work, and he is doing his work with my one voice, one call away. He comes down immediately to me and helps me out in the work, in the profession that he is in. So that man, the police inspector in charge who was standing there, he looked at me and he said, he comes to you on one call, a call away, right? For what? For a bottle of alcohol. A drunkard he is. I said, see, I know, I understand, I agree that he is a drunkard, but not throughout the day he drinks. And at times when I asked him that why do you drink when you drink, he said that, sir, my work is that kind of situation where I have to, because if I don't drink I get afraid and the work is risky, so I have to really थोड़ा सा ही लेता हूँ सर, मैं थोड़ा ही पीता हूँ, थोड़ा पी के अपना काम कर लेता हूँ. So I know him. He is doing good upbringing of his family. That's what I hear. His kids have also completed their education. So that man said, the police inspector over there, he was standing there. He got a little angry and then he said, yes, now you will tell me that he prays me too. He goes to temple and churches and does a lot of prayer and offer me all his prayers. Yet why is he lying over there? I was shocked at these words. He was the police in charge over there, or God. That moment, white light started emerging out from his body, from all around the police inspector's body. White light started emerging out. The face glowed like God, and his dress got completely changed into white. I recognized him as my Krishna, and I understood he is my Krishna, my God standing over there, or you can call your God Allah or Jesus or whomsoever, whatever name you want to call, but he was the angel, he was the God who was speaking to me. That day turned into night in that police station, and then he said,
Does he? I said, yes, I know he goes to temple. And even he goes to mosque. I have seen this guy. He prays over there happily. So then God, this inspector God, said, all those prayers that he offers, all those upbringings, whatever he's done, all those tasks that he's performing throughout the day, upbringing of his children, taking care of his wife, doing all his work, everything becomes worthless when at night he sits with the bottle of wine, the bottle of alcohol, the bottle of beer, and he gets deep dived into it so badly that he forgets everything. Then he does all sorts of wrong things. Such people are a waste baggage on earth. I said, God, please help. They are not waste baggage. They are just distracted. We can help them out. We can show them the right path. I've been trying to help him and he has reduced his drinking habits. I feel so. God said, you feel so? That is not the way how the world works. So I said, tell me, what can I do? You need to show them the path. I said, all of them, but I just know this man. So the inspector God said, you just know this man because he's close to you and he got hurt. So you realized that means only when people close to you get hurt, that time you will wake up. All these 7 bodies which are lying, all of them are in the similar sort of condition. You need to show them the path. You need to show them the righteous path. Wake up. The moment he said wake up, I immediately woke up from my dream. उनके ऐसा कहते ही मैं ड्रीम से उठ गया. उठकर सोचने लगा कि ये क्या देखा मैंने. 7 बुरी हाल में इंसान, बुरे हाल वाले उस बिना बैल और बिना गाय के गाड़ी को खींचते हुए जिसमें 7 लाशें थी, उनको लेकर आए और पुलिस स्टेशन में उनको ऐसी हालत देखी. तो आखिर ये 7 है क्या? ये 7 नंबर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये 7 क्यों देखा मैंने? आखिर ये 7 का क्या रिलेशन है? मैं समझ ही नहीं पाया. पूरा दिन मेरा इसी बात पर सोचते रहा. एंटायर डे आई वॉज थिंकिंग what is this 7, but I couldn't. Then I finally dropped the idea. I said, I don't know, I don't want to get into this. Something bad, but I knew that something bad is happening, something worst is going around. So the entire day just went like that. At night, I think on the same day or the next day night, when I came back from my work and I sat in front of the television, I just switched on the television. I went to Z Cinemas that day because since last 1 month or so I was watching Netflix movies whenever I had time. Very rarely I watch movies nowadays. I'm not in that good mind or good condition because I've got a lot of tasks to do. So I just opened up Z Cinema and I switched on. So I saw the movie over there, Pippa, a new movie, Bollywood movie, Pippa, Hindi movie. It's the movie of 1971 India-Pakistan war, and the tank which was named by the soldiers as Pippa. Pippa means the ghee ka dabba, that means oil container. Okay, so I was watching that movie, and about 70% of the movie, when it got over, suddenly these people were in the movie. The actress was trying to decode a cryptographic message of the enemies, and she was stuck up on the number 7, the resting god. Resting God. Coffee. Thank you. सबको थैंक बाबा बुधन. कौन? हिंदुस्तानी साधु यमन के मोगा शहर से कॉफी के साथ बीन्स स्मगल करके इंडिया लाए थे. सिर्फ साथ? शायद इसलिए क्योंकि नंबर 7 का
हर धर्म के साथ कुछ ना कुछ रेलेवेंस है। ओल्ड टेस्टामेंट में दुनिया 6 दिन की बनी थी। स्टोरी ऑफ द 7 डे वीक ना। So God rested on the 7th day. 7th day. Resting God. 7th day is moving towards the east. American message. East path. ये बार 7 fleets हैं। वियतनाम से श्रीलंका पहुंचे। 7th fleet. Yes sir. बे ऑफ बंगाल के रास्ते से वो लोग ईस्ट बंगाल की तरफ आ रहे हैं। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 7th fleet मतलब? दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज से बना है। 70 से ऊपर फाइटर्स, बॉम्बर्स, गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स और एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस ट्रिपली भी है। मतलब इसीलिए पाकिस्तान हमें छोटी-छोटी लड़ाइयों में बिजी रख रहा है ताकि 7th fleet हमसे पहले ढाका पहुंच सके। Exactly. Change of plans, Mata. So the moment she said the number 7 and the resting God, I got shocked again. Oh my God. God definitely wants something to tell me. He wants me to understand what I saw. And that time, in that movie, if you see that part, that section of the movie, he is saying that there is an Old Testament in Christianity with the number 7, with respect to number 7. The number 7 is called as the resting day of the God. Then I did a lot of research on it on that day. I also remembered that the vision which I saw, the dream that I saw, was on 6th of January 2024, the 7th day, that is Sunday. And on 7th day, Sunday, I saw 7 distressed souls pulling 7 carts with 7 dead bodies in it, the bullockless carts. That clearly indicates towards only one thing, the end of the world. 7. Why 7 is of great importance. Now, whatever I have researched, whatever I have seen, I'll tell you, you yourself too can research and find out what does that 7 stands for. In Christianity, lot of information is there about the number 7, and not only in Christianity, in Hinduism also. Hinduism में भी number 7 की बहुत बहुत महत्ता है. मैं अब आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि नंबर 7 क्यों इंपॉर्टेंट है. When Jesus was asked how we should pray, he gave a perfect way to pray. 7 petitions. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation and deliver us from evil. 7 petitions given by Lord Jesus. And Bhagavad Gita, often referred to as Gita, is a Hindu story containing 700 verses, which was narrated by Sri Krishna to Arjuna during the epic Mahabharata. In Gita, chapter 7, verse 7, Sri Krishna tells us, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी कि तुम हार दो. there is nothing whatsoever higher than you. All this is struck in rest upon rests upon आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी कि तुम हार दो. आन भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. नंबर 7, जैसे मैंने कहा, 7th डे बोला जाता है रेस्टिंग डे ऑफ द गॉड. द 7th डे इज कॉल्ड एज फुलफिलमेंट, कंप्लीटनेस. मतलब जब भगवान ईश्वर अपनी पूरी क्रिएशन, पूरी कायनात को बना चुके होते हैं तो उनका फुलफिलमेंट हो जाता है, तो 7th डे वो रेस्ट करते हैं. ऐसा क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है. लेकिन मैंने देखे ये 7 काट जो बुरी तरह से ध्वस्त थे, इनके ऊपर 7 बॉडी. अगर मैं इसको मानूं तो मुझे तो एक ही इशारा मिल रहा है कि ये 7 के 7 दिन, यानी प्रभु की सारी कायनात, ईश्वर के द्वारा बनाया गया सारा क्रिएशन, एवरीथिंग
is going to come to an end. In how much time? I don't know. I can just analyze. All interpreters around the world can do the needful, but I think 7 years time period, the world will come to end. Probably 7 months, but 7 months is too close. I feel God is benevolent enough to give us at least some time. So I feel in next 7 years time period, by 2030, there will be huge warlike situation arising. I feel that. That's my opinion, my thoughts. I mean, based on what I have seen, but I may be wrong, and I pray God that I should be wrong, because I will try my level best to stop this, to let people know how to be on the righteous path. So that movie provoked me that I need to do research, and I did that. Now see what all things Christianity has to say further. I'll just tell you, and what all things Hinduism also has to say about the number 7. I have just noted down all those points in my notepad. So in Christianity, the number 7 is as completion and perfection. Number 7 also has meaning and denotes completion at the crucifixion, when Jesus spoke 7 statements in agony from cross at the completion of his earthly duties. So Jesus had spoken 7 statements after he was crucified, and those 7 statements are there in Bible. You can go through them, right? I'm not going to discuss all of them over here. Don't want to make this longer, but yet in context of perfection also, Jesus spoke in a grouping of 7 when he was asked how we should pray. So how do Christians pray? When all the as per Bible, when they pray to God, the prayer goes, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, and deliver us from evil. These are the 7 statements that are done, 7 prayer statements which is done. Again, the number 7. The number 7 as exoneration and healing as well. So it is connected to exoneration. Exoneration means when Jesus was asked that how many times should we forgive each other? 7 times, 7 connection, 7 times. So Jesus said 70 times 7. It's there in Matthew 18, 21, 22 verses. So, I mean, Jesus didn't mean that 490 times you're supposed to forgive, but he meant that you surrender yourself completely to God and keep forgiving everyone. That is how you should live life. Again, the number 7 as fulfillment of promises and oath. In Genesis, God promises not to destroy the earth again with a flood, and memorializes this covenant with the rainbow, which is comprised of 7 colors. Yes, the rainbow is also comprised of 7 colors. So that's what I could find in Christianity. But in Hinduism, तो हमें पता है कि 7 नंबर 7 क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसमें क्या क्या है. हमारे सारे सौर मंडल में यूं तो ऐसे 9 ग्रह हैं, लेकिन उन 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों के नाम पर 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 दिनों के नाम 7 ग्रहों के ऊपर है. भगवद गीता जिसे हम जानते हैं, लॉर्ड कृष्णा's भगवद गीता, in chapter 7 verse 7, now pay attention over here. भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें वर्ष में प्रभु कहते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. There is nothing whatsoever higher than me. O conqueror of wealth Arjuna, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. Everything rests upon me, the resting day of the God. This is Bhagavad Gita chapter 7 verse 7. We know a lot about 7 days of the week, right? In Sanskrit it is called as Saptah. Saptah matlab 7 days of the week.
Besides that, we know 7 colors of the rainbow, that is Vipkyor, Sapt Swaras or 7 musical notes, that is 7. The 7 chakras of our body, 7 चक्र होते हैं हमारी शरीर के, मूलाधार से शुरू होते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद 7 होली सिटी है, जैसे अयोध्या, मथुरा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हमारे राम वहां आ रहे हैं। तो अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका, मायापुरी यानी हरिद्वार, हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता है। वैसे ही 7 समुद्र है, 7 होली सीज हैं, लावणा समुद्र, इक्षु समुद्र, सूरज समुद्र, सर्पी, कृत समुद्र, दधी समुद्र, क्षीर समुद्र एंड शुद्ध समुद्र। ये 7 समुद्र है। 7 लोक कहे जाते हैं, जो है 7 होली वर्ल्ड्स। 7 होली वर्ल्ड्स कैसे? 7 ऑन द टॉप इंक्लूडिंग अर्थ एंड 7 बिलो अर्थ, यानी 7 तो ऊपर और 7 नीचे। टोटल हमारे हिंदू शास्त्र में 14 भुवन कहे जाते हैं। 7 ऊपर के लोग कौन कौन से हैं आप जानते ही हैं, और 7 नीचे के तो अतल, वितल, सुतल, रसतल, तलातल और पताल, ये 7 लोक हैं। और ऊपर के लोग हम जानते हैं, जैसे धरती है भू लोक बोला जाता है, भूअर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक जो सबसे ऊपर का लोक है, श्री राधा लोक है। और सप्त ऋषि, इन्हें कौन नहीं जानता, ये भी तो 7 ही हैं। सप्त ऋषि भी 7 है, लोक भी 7 हैं, दिन भी 7 है, और मैं क्या क्या कहूँ, हमारी नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ये भी 7 हैं। हमारे शरीर में जो नरिशमेंट देता है, हमें जो विटामिन हमारे शरीर जिससे बढ़ता है, वो भी 7 है बॉडी में। एक है रस यानी फ्लूइड, दूसरा है रक्त यानी ब्लड, खून, मांस फ्लेश, मेद यानी फैट, अस्थि यानी बोन्स, मज्जा यानी मैरो द बोन मैरो, शुक्र यानी सिमन। 7 सेक्रेट स्टेप्स। हमारी जब शादी होती है, ब्याह होता है, तो उस ब्याह में हम 7 सेक्रेट स्टेप्स लेते हैं। तो इतना महत्व है इन 7 चीज़ों का। सॉरी, ये वीडियो मैं इस तरह से नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बैठा हूँ, रात के अब 2:15 बज रहे हैं और मच्छर भी काफ़ी है यहाँ पर। अकेला रिकॉर्ड करता हूँ, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो हाथ भी दर्द करता है। लेकिन संसार की भलाई के लिए, अपने प्रभु के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। और कोशिश तो यही करूँगा कि मैं जो भी कहूँ, जो भी बताऊँ, आपको सही राह पर लेकर चलने की भरसक कोशिश करता रहूं, और अच्छी राह पर स्वयं भी चलने की हमेशा कोशिश करता रहूं। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हुई है या नहीं होती है, गलती तो हर इंसान से होती है। Everyone does something or the other wrong, but one needs to try his or her level best to walk on the righteous path. So this is the meaning of 7. So you saw how important is 7 in every religion, every scripture. The number 7 is there. It's of great importance. But when I saw 7 distressed souls pulling with greatest difficulty 7 messed up carts with 7 dead bodies on it on the 7th day, what does that tell you? That means all that is made up of 7 is going to get under turmoil, under heavy destruction, and it is only you and me, we together, who can stop this from happening. Lead each and every soul on the right path. Drop all your bad habits. Do the good for self and for people around you. Then only we can save, because in the end, that police inspector in charge told me that only those will survive who will be walking on the righteous path. Those on the evil path, I will take them away from here to the world much, much below, underneath, where it will be hard for them even to live.
forget about. कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार